Hi everyone, I'm Ishan and इस वीडियो में मैं बताऊंगा how can you get a finance job worth 20 lakhs without a single course, internship, live project, research paper or even with a tier 2 or a tier 3 college. So let's get back to it quickly. So basically I might get some backlash for this but this video was nothing but a clickbait. In this video I want to talk about a very sensitive but a very common topic. जिन भी लोगों से मैं पर्सनली बात करता हूँ या फिर जो भी हमारे स्टूडेंट्स है फिर जो भी काउंसलिंग के लिए आते हैं हर एक का एक सिंगल क्वेश्चन या फिर एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है एंड दैट इज हाउ कैन आई गेट अ गुड जॉब हाउ कैन आई गेट इनटू द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स हाउ कैन आई गेट इनटू फाइनेंस प्रोफाइल्स हाउ कैन आई गेट अ जॉब वर्थ 20 lakhs. This is the question that I always get. This is a very ambitious and a very good question. I love it. But when I ask them about their background, majority of them are just doing some random course from a random college. It is, in fact, even BCom, Eco, Maths, and all these specific courses that people usually do. That's not where they are wrong. The point is that they fail to realize, despite having so much information around them, so much information, and yet we fail to understand that just a single degree, just a single course, just a single random college won't get us to our dreams. You know, the point is कि dream बड़ा करना is a very very important part. But सिर्फ dream करना is a very wrong thing. We all know कि हमको क्या करना चाहिए. We all do. You want to get into a good college, study hard. You want to get fit, you go to a gym. You want to get to a certain point in life, you know the process, but you are not willing to follow that. It's as simple as that. इतनी ज़रा simple चीज़ that I really wanted to put it on a bigger scale. अब होता क्या है कि I can easily tell you how can you get a good job. I can tell you to do this, that, these internships and all of it. The point is, will you do it? The point is not how can you do it. The point is, will you do it? If someone is watching this video and you want to get into investment banking, I have made 3 videos in investment banking so far. I can tell you the courses right now. Either you do MBA from a top tier college or you do CA, CFA, along with financial modeling, some internships. You will be an investment banker. Trust me, you will be. Will you do it? That's the point. Another point is I want to become a portfolio manager, but I'm not managing my portfolio itself. Do you think it's possible to become a portfolio manager? And there are so many other examples. The point is you can only get to your dream if you follow the process. If you just daydream, nothing will happen. So, अब जब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि how can I get a good finance job? How can I get a great finance job? My point is very simple. There are 5 things that I've told you. Do them, wait for 2-3 years while you are doing them, and then you will get it. The point is no one is ready to do that. The point is everybody is looking for a shortcut. The point is no one is ready to put the hard work. If you are watching this video, ask yourself, खुद से, कभी ऐसा नहीं हुआ that you thought of doing something, you thought of getting to a particular point, but you just didn't get to that point क्योंकि you didn't put enough efforts. And trust me, I have been at the same stage many a times in my life. 6 महीने बाद का कोई मेरा target होता था at times and I knew what I have to do to achieve that target, but मैं वो कर ही नहीं पाता था because I didn't put enough efforts. It's not like you can't do it. If there is an exam cleared by someone, you can do it too. If there is a job cracked by someone, you can do it too. If there is a startup ran by someone, you can run it too. The only point is the efforts. ऐसा नहीं है कि किसी में दिमाग ज़्यादा है, किसी में दिमाग बहुत कम है. अगर ऐसा है भी तो put in more number of hours, put in greater number of work, and you will get to that point as well. But the question is, are you willing to do it? That is it. So I'll cut it short. I'll only focus on the last part. If you really want to get a good finance job, I'm talking about general finance jobs, कोई specific job के बारे में नहीं, general corporate finance jobs. You have to focus on 4 or 5 things which I'm telling you one by one, and I can only tell you whether you do it or not. It's in your hands. First is extra courses. Trust me, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कॉलेज अच्छा है, आपका कॉलेज बुरा है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. You have to do extra courses. और मैं ये randomly नहीं बोल रहा हूँ. I did my graduation, I'm doing my post graduation, yet I'm doing plenty of courses side by side, despite doing 10 different courses. Yet I'm doing them. तो अगर मैं खुद कर रहा हूँ, मैं तभी बोल रहा हूँ करने के लिए. It's not a random advice. अब extra courses से मेरा क्या मतलब है? If you're a beginner and you have followed us, NCFM, NISM करो, financial modeling करो.
If you are looking for bigger courses, you have to do FRM if you are into risk management. If you're into IB, equity research, financial analysis, koi bhi other profile, you have to do CFA. And this will come along with your graduation or with your post graduation. This is not a standalone degree or a standalone course. बहुत लोग पूछते हैं after NISM will I get a job? The answer is no, you won't get a job. NISM का कोर्स करने में, एक सिंगल कोर्स करने में 2 weeks, 3 weeks, at max 4 weeks. You can get a job after 4 weeks? No, I don't think so. People after doing MBAs, masters, graduation, and so many other things for 2-3 years are not able to get a job. How can you expect a job after 4 weeks of a single course, a single certification? That's not possible. If you're looking for a particular job after just financial modeling, just NCFM, just NISM, stop doing those courses right now because you are not going to achieve your goal. If your goal is a job after a short-term course, it was never the right process. That's what I'm going to say. The point is, do extra courses. Graduation में कोई भी course हो सकता है आपका, post graduation में कोई भी degree हो सकती है आपकी, कोई भी specialization हो सकती है, but you have to do extra courses, both short term and long term. इसके ऊपर बहुत सारी videos already मैंने बना दी है. You can check them on our channel. That's number 1. Number 2 is experience. अब बहुत लोग बोलते हैं यार internships नहीं मिल रही है. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. इंटर्नशिप्स ना मिलना एक जेन्युइन कंसर्न है. कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क पुट इन किया, आपने बहुत ज्यादा कोर्सेज किया, आपने बहुत ज्यादा चीजें करी, तब भी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से इंटर्नशिप नहीं मिली. दैट्स फाइन, बट एक्सपीरियंस डजंट ओनली कम फ्रॉम इंटर्नशिप्स. दे कम फ्रॉम रिसर्च पेपर्स एज वेल एज लाइव प्रोजेक्ट्स. यू कैन डू देम एनी टाइम यू वांट. आपके ऊपर कोई एम्प्लॉयर नहीं है, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके ऊपर कोई डेडलाइन नहीं है. इट्स जस्ट यू हु हैज टू पुट इन द हार्ड वर्क. इससे मेरा क्या मतलब है? लेट्स से शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपने किए, कुछ आपने एनसीएफएम किया, एनआईएसएम के कोर्सेज किए, वहां पे हमने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में पढ़ा, स्टॉक्स के बारे में पढ़ा. कैन यू नॉट मेक अ रिसर्च पेपर ऑन दैट ऑन योर ओन? ऑफ कोर्स यू कैन. रिसर्च करो, टॉक टू योर कॉलेज प्रोफेसर, टॉक टू सम सीनियर्स, टॉक टू मी इफ यू वांट, टॉक टू एनीबडी एल्स. बट रिसर्च पेपर आप खुद से बना सकते हो. यू कैन पुट दैट रिसर्च पेपर इन योर रेज्यूमे, यू कैन पुट दैट रिसर्च पेपर इनटू डिफरेंट कॉम्पिटिशंस, यू कैन पब्लिश दैट रिसर्च पेपर, यू कैन डू थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स विद दैट रिसर्च पेपर. उसको करो. Live project. Suppose you have done financial modeling. What is financial modeling? Basically making the financial statements of a company right from scratch to make future assumptions. आज Reliance अगर 2021 में ऐसा कर रहा है तो 2025 में कैसे करेगा? That's a part of financial modeling. Can't you do that on your own? अगर आपने financial modeling complete कर लिया, आपने valuations complete कर लिया, can you not do live projects on your own? इतने सारे mergers होते हैं, acquisitions होते हैं, उनको भी चलो एक सिंपली हटा देते. तो इतनी सारी रैंडम कंपनीज है, कांट यू मेक देयर फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑन योर ओन? दीज लाइव प्रोजेक्ट्स आर इन योर हैंड्स, नॉट इन एनीबॉडी एल्सेस. तो ये करना शुरू करो, लाइव प्रोजेक्ट्स बनाओ. इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, वर्क फ्रॉम होम मिल रही है, वर्क फ्रॉम ऑफिस मिल रही है, इनकन्वीनियंट मिल रही है, नॉन पेइंग मिल रही है, उन सबको हटा दो. रिसर्च पेपर्स और लाइव प्रोजेक्ट्स तो एटलीस्ट हमारे हाथ में ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है हमारे हाथ में. तो वो ही कर लो, बट उसको करो एंड उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. वो आपको खुद डालने हैं, ना मैं, ना कोई और, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके टीचर्स आपको हाथ पकड़ के आपके लाइव प्रोजेक्ट्स या फिर रिसर्च पेपर्स करवाएंगे. इंटर्नशिप्स करनी है genuinely, it's still possible. You can connect with me. I always share internships in my Telegram channel. Whatever I get, I try to share them. But उसके लिए अगर आपको इतना वेट नहीं करना है, नहीं मिल रही है, then at least ये दोनों करो. ये दोनों totally आपके हाथ में ही है. Number 3, which people forget about, is your extracurricular activities. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल में 8th या 9th क्लास में क्रिकेट टीम में थे. इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल में हाउस प्रीफेक्ट थे. इससे मेरा मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब है पोस्ट योर स्कूल. व्हाट हैव यू डन अपार्ट फ्रॉम स्टडीज? दिस कुड इन्वॉल्व अटेंडिंग एनी गुड conference. I've already made a video on Harvard conference, how I applied for that, how I got selected, and how was my experience. You can check that. Anybody can apply for a Harvard conference. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिले ना मिले, बट हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस में यू कैन गो एनी टाइम इफ यू गेट सिलेक्टेड. वॉच दैट. कॉन्फ्रेंसेस के बाद आती है सोसाइटीज. एवरीबडी इज इन अ कॉलेज सोसाइटी, मेजॉरिटी ऑफ अस. ठीक है, तो कॉलेज सोसाइटी के अंदर आपने क्या काम किया? इफ यू गेट अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर द मे बी द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कुछ भी. इफ यू वर दैट, इट काउंट्स इन योर रेज्यूमे. बिकॉज अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो एक 20, 21 या 22 ईयर ओल्ड से दे डू नॉट एक्सपेक्ट टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. दे ओनली एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपने लेवल पे तो है. अगर आपको वो भी नहीं है, देन इट गोज अगेंस्ट यू. तो इफ यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ अ गुड सोसाइटी इन अ कॉलेज, दैट ऑल्सो काउंट्स. दैट्स योर extra curricular activity. If you're a part of a sports team in your college, that's a very big thing. That's a part of your extracurricular activity.
Then similarly there are many other things that could be a part of your ECA जो मैंने already बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे. So do that. It will not only fill up your other section of resume but also help you in understanding life and understanding how you can work in teams. अगर आप एक सोसाइटी में हो, how you can work in team उस तरह अच्छी तरीके से नहीं आएगा. If you are leading a college team, you are a captain of any particular sports team, you can learn about leadership. There are so many other things that we understand from ECA, hence they are important. आपका जब रेज्यूमे बनता है ना, सबसे ऊपर आती है एजुकेशन, नेक्स्ट लेवल पे आता है एक्सपीरियंस, दैट इज योर इंटर्नशिप्स एंड ऑल ऑफ इट. देन आपका पूरा का पूरा सेक्शन ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटरेस्ट और बाकी एक्टिविटीज से ही भरा होता है. तो वो फिल करना है, उससे सीखना है, तो ECA का पार्ट बनना बहुत जरूरी है. एक छोटा सा एग्जांपल ये भी है कि जो लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, दैट्स नॉट इनफ. अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर भी लोगे बट इंटरव्यू में इफ यू कांट स्पीक, if you can't convince, if you can't communicate, if you can't showcase them the inner qualities of a particular good employee, then शायद तब भी जॉब ना मिले. CFA, MBA, FRM, your graduation, nothing can guarantee you a job if you go in the interview and mess it up. So सबसे ज़्यादा important है कि ये चीज़ें भी सीखें और इससे कुछ सीखें. Number 4 is your communication skills. A lot of people ignore it. A lot of people don't talk about it, but it's equally important. Same चीज को मैं थोड़ा सा और continue करता हूँ. If you go on and attend or be a part of any interview, if for a big company, you have everything in your resume. You cleared the test, you cleared the resume selection part. Now they are asking you in your interview some random questions that you have not prepared for. Tell me about yourself. तो आप prepare कर रहोगे, strengths, weaknesses, your hobbies. If you have any other questions, ये सब you can prepare. But if they ask you about a random thing, let's say, tell me about your family and what do they do? Or maybe tell me one activity that you did and that taught you about life. If they ask you something totally random that you have not prepared for, then how will you answer? How will you communicate? How will you convince? What is your body language? What is your presentation? Are you looking in the eye? Are you happy? Are you smiling? Did you have a handshake? There are so many things that you have to keep a check of when you are in the interview. तो सारे कोर्सेज करना बहुत जरूरी है, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट, रिसर्च पेपर्स करना बहुत जरूरी है, बट इवेंचुअली इफ यू लीव दिस पार्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव इन योर प्रोफाइल, इट जस्ट वोंट काउंट. तो इस पे भी उतना ही काम करो जितना आप नंबर 1 पे कर रहे हो, जितना नंबर 2 पे कर रहे हो, जितना नंबर 3 पे कर रहे हो. बट फोकस ऑन दिस एज वेल. इट्स वेरी सिंपल. You can watch shows on Netflix. A lot of people are doing it already. You can read a newspaper. You can read articles. You can go through a lot of things over the internet. You can build your vocabulary by learning new words. You can practice reading. You can practice public speaking. You can practice hundreds of things. But you have to focus on your communication and convincing skills as well. Convincing skills के लिए best is do a sales internship. A lot of people hate the word sales. I don't know why. If you learn sales, you can convince anyone. And the most important person you want to convince is your recruiter in your interview. Isn't it? तो उसको सीखो, उसको करो, एंड सब कुछ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है इन रियल लाइफ. दैट इज ऑल आई वांट टू से, दैट इज ऑल आई वांटेड टू कन्वे. So these are my 4 things that I wanted to tell you. अब सिंपल सा पॉइंट है यार, मैंने सब कुछ बता दिया, मेरा काम बताना ही था, करना आपका काम है. And please focus on these things. I know it's difficult. I know it's difficult to get into the best college. I know it's difficult to get into the best job, best everything. But don't you think that the best thing is the most valuable? It is. It definitely is. And it feels, or probably will feel great if you get what you wanted, isn't it? तो उसको please करो, अपने efforts डालो. 5 to 7 years later, you will be very proud of yourself. That's the only thing I can say. Because when you are 30, 35, at least for 70 to 80% of people, they will be continuing with what they are doing. ठीक है, बहुत सारी motivational stories तो आ जाएगी that the founder of KFC started at this age, the founder of McDonald's started at that age and all of it. But खुद से पूछो कितनी बार ऐसा होता है कि somebody you knew was doing a particular thing till the age of 35 changed it totally after 5 years. It is very rare. It's possible, doable, but very rare. So आज अगर आप 20, 22, 23, 24 के हो और ये वीडियो देख रहे हो, you have the next 5 years to do whatever you want and build yourself. Build your career. Do whatever the hell you want to do. You can do it. All you have to do is put in the efforts. That is it. You can achieve whatever you want. But getting a finance job, or for that matter, any job, anything that you want to do that is exceptionally well, that won't happen just by chance. You have to put in the efforts for that. So I wish you all the best. If you have any questions, anything you want to put it up, you can always feel free to comment. Thank you so much.